Hi, this is Swapnil Bhaskar Vyas from Pimpri Chinchwad, Pune, Maharashtra. I am son of a super mechanical engineer and a super duper headmasters of an secondary school. I am an ENTC engineer and I am the younger brother of an ENTC engineer as well. So please do join the video till the end. At the end you will get the 2 ways to make your dreams come true. Let us wait for some people to arrive. Otherwise we will start on our own. Okay, we will start now. We will start with the dreams. If you have dreams, given goals and aims, the dreams with a deadline, and you all have professional goals, personal goals, financial goals and lifestyle goals. We will start with the lifestyle. If you want to do a healthy active lifestyle to live, then you have to check your daily habits of eating and exercising. लाइफस्टाइल में होता कैसे था, पुराने ज़माने की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत बढ़िया थी। इसी के लिए वहाँ पुराने ज़माने में लोग 100 साल तक जीते थे। लेकिन उस वक्त का एग्रीकल्चर अलग रहता था। उस वक्त कोई खत वगैरह नहीं यूज़ किया जाता था और नेचुरल एग्रीकल्चर होता था उस ज़माने में। हमारे ज़माने में एग्रीकल्चर की पूरी वाट लग चुकी है। We don't have the previous nutritions that we were getting 30 to 40 years back from vegetables and other food products. Food means other farm products. So एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल हैज़ बीन चेंज्ड। एक दिन में फल पक जाता है और दूसरे दिन में वो बाज़ार में भी आ जाता है नाउअडेज। तो एग्रीकल्चर के वजह से प्रॉब्लम हो चुका है बहुत सारा। उसके आगे चलते हैं तो हम पहले देखा करते थे कि आदमी पतला होता था और टीवी मोटा होता था। आजकल के ज़माने में आदमी मोटा हो गया है और टीवी स्लिम हो गया है। और भगवान ने हमें बॉडी दी थी एज ए शोरूम करके, और हम लोगों ने उसे पूरी तरह से गोडाउन बना के रख दिया है। सो if we want to have healthy active lifestyle, we need to get 30% fat, 30% minerals, proteins and 40% carbohydrates.
So we should to get all this, we cannot complete this quota by having our regular meals, and we use the high carbohydrated चीज़ें, हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर और फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमें 4-5 प्रकार के लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं। ओबेसिटी उसमें नंबर 1 है, हार्ट अटैक है, शुगर है, बीपी है और स्ट्रोक्स हैं। सो these are the topics, these are the 4 problems which are generated mostly from the wrong lifestyle that we are living right now. We should eat more sprouts, vitamins, minerals, vegetables. and पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग कोंडा जिसको बोलते हैं, वो कोंडे की रोटी भी बना के खा लेते थे। आजकल के ज़माने में ये हो गया है कि हम लोग कोंडा जानवरों को खिला देते हैं, और हम प्यूरिफाइड करके पूरा जीवन सत्व निकल चुका हुआ खाना हम लोग खाते हैं। इसीलिए जानवरों का पेट ठीक से साफ होता है और हम लोगों को सुबह में दिक्कत होती है। हमारे खाने में स्प्राउट से या फाइबर ज़्यादा जाना चाहिए, जैसे कोंडे में रहता था वैसा फाइबर ज़्यादा जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा फाइबर होने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है और हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। हम लोग फैट भी खाते हैं, लेकिन ओमेगा 6 फैट खाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अपायकारक है। और हम ओमेगा 3 जो कि हमारे बॉडी को रेगुलरली सप्लीमेंट होना ज़रूरी है, वो फैट हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो ये था लाइफस्टाइल के बारे में। सो जिन लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपना वेट गेन करना है, या फिर फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है और वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, तो I have one WhatsApp link which will be given in the comment section of this video, and लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग अगर आगे जाके बोलना चाहें तो we should like to live the celebrity like lifestyle. So there come our business goals and financial goals. All of us have a financial goal, like we should be financially free, we should feel secured, and we should have much more wealth than we are not already getting, but हमें लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम हैप्पी नहीं हैं, लेकिन कई गरीब लोग ऐसे हैं जो बिना पैसे के भी हंसी खुशी में ज़िंदगी जीते हैं, और कई अमीर लोग होते हैं जिनको बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त होकर के
रहना पड़ता है तो उनके प्रॉपर्टी होने का भी उनको कुछ फायदा नहीं होता। तो हमें बोथ द थिंग्स चाहिए, हेल्थ एंड वेल्थ हमें ज़िंदगी में चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस रहेगा तो हम ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेंगे। और बाय द वे, हैप्पी रहना हमारी मजबूरी नहीं है, या फिर हैप्पी रहना हमें किसी एक्सटर्नल चीज से मिलने वाला नहीं है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस। If you born as a in poor family or as a poor person, then that is not your fault. But if someone has said if you are born in a poor family or house, then that is not your fault. But if you die in the same situation and if you die poorly, then that is definitely your fault. So the goal is to be happily wealthy and happily successful. And then other is financial goal. Means in financial goals we have lofty dreams like financial freedom, early retirement, passive income. So for all that, goal setting structure is required. And in goal setting we should always have a big dream. But having a big dream and putting its picture on the wall in front of your table, it will not only putting it on before your desktop will not make you achieve that goal. But we have to do step by step goal setting. That is, we should truncate our goals. We should truncate our goals and daily, if we take daily massive actions consistently, then we used to do those and then your life cannot change in one moment, but the direction of your life can be changed in a heartbeat. So direction of your life and goals can be changed in 1 second, and that is your decision. And you cannot be multimillionaire in a night, but you can prepare your mindset to be multimillionaire. Your mindset can be changed to become a multimillionaire in a single night. So there comes another part, that is belief. If you have belief in your goals, then only you can achieve those goals. If you don't have your belief in yourself and in your goals, then you cannot achieve big goals or even smaller tasks as well. So someone has said that you can perform up to your belief system. You can perform, or you can underperform your belief, but you cannot outperform your beliefs. Means you can get the success as per our belief system. We can get up to our belief system or less than our belief system, but we cannot get more than what our belief system conceives us to be. So for those people who are
looking for this kind of financial freedom, you need to believe in yourself. And for those who want to become financially free and have lofty dreams to move the world, travel the world, and then then you can join our other link, which is earn extra income. So first was lifestyle, healthy active lifestyle. For that we have one link of our WhatsApp group, and for the people who want to be economically, financially successful, stable, for those we have another link, earn extra income. So thank you very much for today's session. Please, thank you very much for today's section. So please, we should come together and work together for making the world healthier and happier, and changing people's lives by positive manners. We can help together with people to get their health and wealth better. So for those people, there is another link, that is earn extra income. And the people who are looking only for their health goals can join the Live Healthy Life group. So that was from me. We can get together and change this world in a moment. And we should never forget that we are the gift. Our life is the gift given by God to us, but what we do with this life is our gift to God, and we should not be unrealistic, or we should not be arrogant to be doing nothing with what God has given to us. So please become an angel who has come to help in the life of many people, and become successful person in all aspects of your life. And also you can learn your educational skills, your lifetime skills here only in this our Earn Extra Income group and Live Healthy Lifestyle group. Thank you very much for watching my video till the end. I will close this video and give the link in the comment section, because in bio section there is limited space. So I will give the links in the comment section in 1 to 2 minutes. So if you like my video, then you can join one of the groups, or you can join both the groups. Thank you very much.